हाय folks, सादिया मोहम्मद here और आज हम ए टू सिलेबस के बारे में इन डेप्थ बात करेंगे कि ए टू फिज़िक्स में कंटेंट क्या है, आपका पेपर कैसा है, कितने पेपर्स के लिए अपेयर होना है एंड स्टफ लाइक दैट. Before starting, I would like to say कि just whenever you're starting something, be it parhai or anything you want to do, just think it's never too late nor too early. Right now, when the thought has occurred into your mind, उसी वक्त it's the right time. Because I'll tell you what will happen. If you, for instance, अगर आपने सोचा कि आपको फिजिक्स का आज ये चैप्टर करना है, ठीक है, एंड होगा क्या कि there's going to be a thought in your mind it's too late and you shouldn't do it, ठीक है, and what's going to happen is that you're just going to say, oh, it's too late, why don't I just scroll through Instagram or watch a video on YouTube. And 2 days आफ्टर दैट डे जब आपके दिमाग में वो थॉट आई है कि आपको ये सिलेबस करना है, ये चैप्टर करना है, आप उस वक्त सोचेंगे अच्छा उस वक्त कर लेता तो कुछ हो जाता, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता. एंड देन इस तरह करते 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 आपका एग्ज़ाम आ जाता है. So just keep in mind it's never too late. If you want to do something, do it right now. No excuses. Okay? Acha. So let's start. Okay, so for A2 syllabus, you're supposed to appear for 2 exams. आपने AS में 3 एग्जाम्स दे दिए हैं, A2 में आपको 2 एग्जाम्स देने हैं. आपके A2 में आपको 2 एग्जाम्स देने हैं. पहला आपका पेपर 4 है. पेपर 4 इज अ थ्योरी पेपर जैसा आपका AS में पेपर 2 होता था. लेकिन पेपर 2 was just 60 marks and आपका टाइम होता था 1 hour 15 minutes. That's not the case now. After A2 में you're gonna have 100-mark paper and you'll be given 2 hours to solve it. अच्छा, तो इसमें there will be questions based not only on your A2 syllabus. आपके AS level की भी testing हो सकती है. As you can see here, it's wait, why am I just crossing it off? I wish I could do that, but no, I can't. इसमें लिखा हुआ है कि questions are based on A-level syllabus. Knowledge of material from AS-level syllabus content will be required. So you should master your A-level AS concepts as well before solving paper 4 because they will be testing that. अच्छा, आपका फिर दूसरा पेपर जो है वो है पेपर 5. उसमें आपकी प्लानिंग, analysis and evaluation की testing होगी. It's like an ATP that we used to give in O levels, but a more advanced paper, a little more harder exam, I must say. इसमें you will have 30 marks and the time you will be given is 1 hour and 15 minutes. So yeah, to be honest, I don't know what are exemptions for May, June. I don't think so there will be, but if they are, I would still recommend you guys going for this paper as it's like a mark gaining exam. तो आपका grade बढ़ता है इस paper के, ऐसे कम नहीं हो सकता. Okay. Now let's talk about the syllabus content. आपका सबसे पहला syllabus जो है A2 में वो है motion in a circle. This chapter is very very important जो students अक्सर भूल जाते हैं. Because the thing is कि ये जो concept एक पूरा motion in a circle, basically कोई object किसी circular path में हिल रहा हो, ये concept will be in not only in this, like ये concept आपका सिर्फ इस chapter में नहीं रहेगा, ये concept आप gravitational fields में आएगा, ये आपका concept electric fields में आ रहा होगा. So you really need to grasp what's happening in this chapter. Acha. This video we'll be talking about the kinematics of uniform circular motion, and then you'll be introduced to a new type of acceleration, which is centripetal acceleration. उसके बाद topic number 2 that you'll be doing is gravitational fields. तो हमने सिर्फ अभी एक circular path की बात की थी. Now over here you'll be given an environment जहाँ पे circular motion हो रही होगी, and that's going to be your outer space. तो इसमें आपकी forces जैसे circular motions में कुछ और होंगी, gravitational fields में आपकी different types of forces होंगी, just like gravitational potential, gravitational force and stuff like that. Again, I feel like this is very easy if it's done the right way.
पास्ट पेपर वाइज क्वेश्चंस इसके आएंगे ग्रेविटेशन फील्ड्स के, बड़े क्वेश्चंस आएंगे, सो यू रियली रियली नीड टू प्रैक्टिस अबाउट दिस, लाइक आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपका पेपर होगा। सो या इसमें आपकी ग्रेविटेशन फील्ड की बात हो रही होती है, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन पॉइंट मैसेस। बाय पॉइंट मैसेस दे बेसिकली मीन क्या, करिए मेरा सर्कल है, सो दिस इज गोना बी द पॉइंट जहाँ से मतलब डिस्टेंस हमारा मेजर हो रहा होगा। So don't get confused when they're saying point masses. It's nothing out of the blue. अच्छा, then they will be talking about कि gravitational field जो है हमारी point mass की है क्या। Again, and इसमें बहुत ज़्यादा derivations हैं, and these derivations will be asked from you in the exam. So you really really need to do this chapter really well, and hopefully you will be able to. So don't stress about it. मुश्किल नहीं है इतना. And then the last key point in this will be gravitational potential. So they'll be talking about kinetic energy and potential energy in outer space. Okay, so the third topic that we'll be doing is temperature. Temperature mein they'll be talking about thermal equilibrium. Okay, what is a thermal equilibrium? हमारा temperature higher temperature region से कैसे lower region में transfer होता है. And then they will be talking about कि equal temperature कैसे होता है एक thermal equilibrium में. फिर इसमें you'll be also talking about temperature scales. So you need to be aware कि क्या क्या चीज़ें temperature का affect करती हैं. Like it's not just like a mercury, right? आपको पता है कि हम resistance के ज़रिए भी temperature measure कर सकते हैं, so and so forth. So it's going to be talking about stuff like that. Then they will be also talking about specific heat capacity and specific latent heat. So you need to define and use specific heat capacity and define case and use specific specific latent heat क्या है, और specific latent heat of fusion, specific latent heat of vaporization क्या चीज़ है. Again, it's not that hard to be honest. आसान है ये, आप जब तक दिमाग में रखेंगे कि आसान है तो आपसे आराम से हो जाएगा. Again, A2 syllabus, in my point of view, I feel like the content is easier than AS. Yeah, the paper tends to be a little harder. Again, it's still easier, तो आपसे आराम से हो जाएगा. Just keep that in mind. अच्छा, अब हमारा टेम्परेचर के बाद वी विल बी डूइंग आइडियल गैसेस. आइडियल गैसेस में थोड़ी सी प्री रेक्विजिट नॉलेज केमिस्ट्री की चाहिए होती है. अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ओके, वी विल बी कवरिंग दैट देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. लेकिन यू नीड टू लाइक be familiar with the concept of moles and Avogadro's constant and stuff like that. Then ideal gases, they'll be talking about कि ideal gas होती क्या है, क्या conditions होती हैं, equations of a state क्या होती हैं. They'll be also talking about kinetic theory of gas क्या है, मतलब जो हम लोग assumptions रखते हैं kinetic theory of gases में, and stuff like that. इसके बाद हमारा चैप्टर है थर्मोडाइनमिक्स. अच्छा, हमने थर्मोडाइनमिक्स के इसमें हमने थोड़ी बहुत ओ लेवल्स में किया था, तो दे विल बी अज्यूमिंग कि आपको ये सब चीज़ें पहले से पता होंगी जो ओ लेवल्स में क्या होगा. अच्छा, तो थर्मोडायनामिक्स में हमारे पास इंटरनल एनर्जी के बारे में बात आ जाती है, एंड देन दे विल बी आल्सो टॉकिंग अबाउट कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है क्या, एंड दैट्स इट. स्मॉल चैप्टर, राइट? Again, past papers, and you'll get a grade. That's it. It's easy. But yeah. अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है ऑसिलेशंस का चैप्टर. ऑसिलेशन के चैप्टर में दे विल बी टॉकिंग अबाउट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या है, एंड एनर्जी जो हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती कैसी है, एंड स्टफ लाइक दैट. ऑसिलेशन इज बेसिकली कोई भी चीज़ जिसके पास एक एम्पलीट्यूड और एक इट्स लाइक, अगर मैं वेव्स की बात करूँ तो हमारी ऑसिलेशन ये होती है कंप्लीट ऑसिलेशन. सो कंप्लीट वेव. अगर हम पेंडुलम की बात करेंगे तो लेट मी ट्राई. तो मेरे यहाँ पे अगर पेंडुलम है तो यहाँ से उसकी जर्नी जो इधर हिला, फिर इधर गया, फिर वो इधर जो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आता है,
So that's like a one complete oscillation. So it's like basically a study about that. It's very easy to be honest. आपसे आराम से हो जाएगा, so don't stress about it. But yeah, उसके बाद हमारे पास चैप्टर आता है electric fields. Electric fields is kind of similar to the concept of gravitational fields, not like same to same. जाहिर सी बात है, it's different, but the concepts are quite familiar. तो this should be very easy for you. So इसमें हमने electric fields के बारे में बात कर रहे होंगे. Field lines होती क्या हैं? What does a uniform field look like? Electric field look like? Electric force जो हमारे point charges के between होती है वो क्या है? Electric field एक point charge की क्या है? And we'll be also talking about कि electric potential क्या होता है. उसके बाद हमारे पास आती है capacitance. This is something that you'll be hearing about for the first time. इसकी कोई prerequisite knowledge नहीं है. They'll be talking about कि capacitors, capacitance होती क्या है, energy capacitance पे कैसे store हो रही होती है and stuff like that. And they'll be also talking about कि हम capacitance को कैसे discharge कर सकते हैं. उसके बाद हमारा chapter, and to me personally it's like the hardest chapter in your A2 syllabus, that's going to be magnetic field. It's a very long lengthy topic and आपके पास पेपर में इससे ज़रूर सवाल आता है. So ये आपका concept बहुत ज़्यादा पक्का होना चाहिए. अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में फर्स्ट वी टॉकिंग अबाउट कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है एंड how we represent a magnetic field. Here they'll be talking about force on a current carrying conductor. फिर they'll be talking about force on a moving charge. फिर इसमें हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो करंट की वजह से कॉज हो रही होती है. फिर इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात होगी. दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग चैप्टर. अच्छा, आपने जब ये सब पढ़ लिया होगा फिर आप आते हैं एसी करंट्स में. तो ये आपका मैग्नेटिज्म का चैप्टर लिंक्ड है एसी करंट से. तो आपको मैग्नेटिज्म का भी बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है ताकि आप एसी करंट्स को अच्छा कर पाएँ. ओके, तो इसमें दिल भी टॉक इन एसी करंट्स आपकी बात हो रही है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एसी करंट्स की, रेक्टिफिकेशन स्मूथिंग क्या चीज़ होती है आपकी एसी करंट्स की. उसके बाद दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट चैप्टर. इट इज़ क्वांटम फिजिक्स. इसमें दे विल बी टॉकिंग अबाउट एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ अ फोटॉन. के फोटॉन है क्या एंड very easy, simple, favorite stuff. So I genuinely enjoy teaching this. Also, one word pagal ho gaya. Hey, let's just ignore the red line. Okay. Then they'll be talking about photoelectric effect. What is a photoelectric effect, or इसमें photoelectric emission क्या होती है? And you need to explain these things in terms of photon energy and work function energy. Very easy, simple, and to the point. And I think because of this आपको interest भी develop होगा. फिर इसमें वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में बात है. सो बेसिकली फोटॉन की कुछ प्रिंसिपल्स पार्टिकल्स जैसी हैं एंड देन कुछ प्रॉपर्टीज वेव्स जैसी हैं. सो इट्स टॉकिंग अबाउट दैट. And then the last key point in quantum physics is energy levels in atoms and line spectra. Again, very, very easy. Okay. Then we have nuclear physics. हमने AS में भी nuclear physics किया था तो उसकी continuation है. इसमें they'll be talking about mass defect and nuclear binding energy. So इसमें you'll be like you have to use equations जो आपने बहुत famous सुनी होगी, E is equals to mc square. So आप इसको समझेंगे and you're like your mind is just gonna be whoa, what is happening? Very fun. Maybe I'm just in love with this physics, but oh well, that's not what you're going to talk about today. And then इसमें एक और चीज़ है radioactive decay के है क्या चीज़ and half life and stuff like that. Again, easy peasy. अच्छा, since we'll be talking about the new syllabus जो 2022 onwards इस्तेमाल होगा तो इसमें आप लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि मेडिकल फिजिक्स बहुत कम हो गया. They have removed many pointers from here. It's a good thing to be honest, but yeah.
So इसमें they'll be talking about production and use of an ultrasound as well as X-rays. So इसमें आपकी अच्छी grasp होनी चाहिए here. But yeah, and then they'll be also talking about PET scans. What is it about? इसमें क्या क्या हो रहा होता है? इसमें हमारे पास like gamma ray photons होते हैं and stuff like that. So it's fun and it just really opens your mind, and yeah, it's a fun chapter. Like for A2 physics in general, I think it's very fun comparatively to AS, but that you're allowed to have your opinion. But to me personally, I really love A2 physics. अच्छा, इसमें अब एक नई new edition हुई है, that is astronomy and cosmology. So इसमें basically like I feel like this is a very good addition in our A2 syllabus, and this will actually inspire people to work in space and stuff like that. And maybe, who knows, कि NASA से 10 साल बाद इनकी जो रिक्रूटमेंट हो रही होगी वो आधे बच्चे A levels के होंगे. But it's very fun to do. I personally love this, as you can tell. अच्छा, तो इसमें they'll be talking about standard candles, है क्या, stellar radii, Hubble's law, and the Big Bang theory. But yeah, very very fun stuff, to be honest. Acha, so that was it. Again, I feel like A2 syllabus in general is very much fun to do. आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इसको करने में. And yeah, so general tip to get an A star in your A levels is just that do past papers, understand your concepts, not just rectify. Because अगर आप rectify करेंगे ना तो फिर आपका grade आ जाए शायद, ठीक है. लेकिन आप रियल लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे. लाइक इट्स लाइक अगर किसी बच्चे ने रट्टा मारा है नमाज की टाइमिंग्स, ठीक है, जो नमाज हम पढ़ते हैं ना फजर ज़ोहर, उसने वो रट्टा मारा है कि मतलब 6 बजे फजर का वक्त होता है, ज़ोहर का वक्त 1 बजे होता है, स्टफ लाइक दैट. तो उसको जब पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा कि ये फजर इन सब का टाइमिंग सेट कैसे होता है, तो वो गर्मियों में भी फजर 6 बजे पढ़ रहा होगा, तो ये तो फिर गलत हो जाएगा ना, आपकी फजर तो कज़ा हो गई. तो क्यों क्यों उसके साथ हुआ? बिकॉज ही डिडंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि प्रेयर टाइम्स कैसे हमारी होती हैं. इट्स बिकॉज ऑफ द सन. तो या तो अगर आप रट्टा मारेंगे, यू माइट बी सक्सेसफुल इन योर एग्जाम्स, यू वोंट बी सक्सेसफुल in your practical life. So, have fun studying, past papers karte hai, don't think it's just like a task. It's just like another day of studying. Have fun. But yeah, so that's it for me. Have a great day and take care. Love this. Bye bye.